Hello students, class 11th biology, chapter 20, that is locomotion and movement. Student, movement of some form occurs in all living organisms. It could be the movement at the cellular level like a cytoplasmic, amoeboid, ciliary or flagellar movement, or at the organ level. It could also be to the movement of the part of the body like a movement of limb or heartbeat or the movement of the whole organisms. The first to occur in plants as well as while the last one called a locomotion is seen only in mammals. There are a few animals like sponges which are fixed and do not locomote but show a great degree of cellular and body part movement. So types of movement in living organisms. These are non-muscular movement of the cells. ये क्या होते हैं? मूवमेंट एट द सेलुलर लेवल. इसमें अमीबॉइड मूवमेंट्स है जैसा मैंने अभी आपको बताया, सीलियरी मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट ऑफ एन ऑर्गन्स में. एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब, अपेंडेजेस, हेड एंड ट्रंक रिजल्ट इन मेंटेनिंग अ फेवरेबल एंड स्टडी पोस्चर अगेंस्ट ग्रेविटी. Movement of limb, mouth, jaws, tentacles, snout or tongue help to capture and ingest the food. Movement of eyeballs and pinna of ear help to collect information. Movement of limb and face help to communicate through facial expressions. Internal body organs, these are in the form of visceral movements which occurs within the body to move materials within the organ or from one organ to another. Cardiac movement, movement of thorax brings about ventilation of lungs. Peristaltic movement, contraction of blood vessels alter the blood flow in the body. Locomotion in human में locomotion क्या है? Locomotion in human is brought about the contraction and muscles attached to the skeleton. The muscles contraction move the veins of skeletal system like levers and their coordinated movement. Skeletal system, muscular system, tendons and ligaments. Muscular system in humans. Types of muscles. कितने types की होती हैं muscles? देखिए. Muscles are made up of highly specialized thin and elongated cells. जो मसल्स होती हैं वो बनी होती हैं किसके द्वारा? हाईली स्पेशलाइज्ड थिन एलोंगेटेड सेल्स होती हैं जिन्हें हम मसल फाइबर्स कहते हैं. दीज मसल फाइबर्स हैव अ कैपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट द रिलैक्स. दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल साइज आफ्टर बीइंग स्ट्रेचेस. दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. ऐसा क्यों होता है? किसके प्रेजेंस के कारण? इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स, मायोसिन एंड एक्टिन प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स. उसी के कारण होता है ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी. राइट. बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? स्केलेटल, स्ट्रेटेड, स्मूथ और अनस्ट्रेटेड. कार्डियक. ये कार्डियक मसल्स, ये सारी मसल्स हम पहले पढ़ चुके हैं. अब इसमें ये दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल और स्ट्रेटेड मसल्स में. लोकोमोशन क्या है? द स्ट्रेटेड मसल्स आर फाउंड अटैच टू द स्केलेटन इन द हेड, ट्रंक एंड लिम्ब रीजन एंड देयरफॉर आर आल्सो कॉल्ड द स्केलेटल मसल्स. इसमें क्या है? स्ट्रेटेड मसल्स possesses distinct cross station इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स. आपको लाइट और डार्क बैंड दिखाई दे रहे हैं ऑफ 1 एंड ए बैंड रेस्पेक्टिवली. फर्स्ट मीन्स मतलब आई मीन्स क्या हो गया? आइसोट्रॉपिक, दैट इज इट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू एंड सो अपीयर्स लाइटर, वाइल ए मीन्स एनिस्ट्रॉपिक, that is it does not allow the light to pass through and so appears darker. A muscle is composed of a number of muscle fibers.
Each fiber further consists of numerous thin myofibrils. Structure of muscle fiber का क्या है? Muscle fiber is elongated, unbranched and cylindrical in shape. Number of muscle fiber are arranged parallel to each other and are bound together by vascular connective tissue. Each muscle fiber is 0.1 to 20 micrometers in diameter and several millimeters long. The muscle fiber are essential, that is multinucleate. The nuclei are present near the periphery, just beneath the bounding membrane, और इसे हम क्या कहते हैं? सार्कोलेमा. The muscles fiber have sarcoplasm, sarcosomes and sarcoplasmic reticulum. The light and dark bands visible under the light microscope are due to the aqueous striation present in the myofibrils. The myofibrils are arranged along the long axis of the fiber. स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या है? एक्टिन और थिन फिलामेंट्स. एक्टिन हैज लो मॉलिक्यूल्स वेट. ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 हेलिकल स्ट्रैंड्स ऑफ एफ, यानी कि फिलामेंटस एक्टिन्स मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड अ जी एक्टिन. एफ एक्टिन स्ट्रैंड आर द ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर. The whole assembly of actin molecules in the form of filaments is called the F-actin. Along with the actin filaments, F-actin are present with two accessory proteins. कौन से हैं? ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन. ट्रोपोमाइसिन क्या है? It is a rod-shaped fibrous protein, and these rods link end to end to form 2 helical strands which are wrapped around the F-actin in a longitudinal fashion. Tropomyosin function to switch on or off the contractile mechanisms. और ट्रोपोनिन क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन. ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है विद द 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट एट अ रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमाइसिन. इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव साइट ऑफ एफ एक्टिन. मैकेनिज्म्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है? लेंथ ऑफ ए बैंड remained constant during contraction and reflection. Length of I band kept decreasing during contraction. H zone kept on getting shorter and finally disappeared. In a fully contracted muscle, there was no H zone and instead a thicker line called M line appeared. Overall decreased length of sarcomere due to shortening of I band. Diagrammatic view in human skull. The skull is formed by a number of bones. स्कल का फॉर्मेशन होता है बहुत सारी बोन से मिलकर बनता है. दीज आर द क्रेनियम, फेशियल बोन्स, बोन्स ऑफ मिडिल ईयर, हायोइड. क्रेनियम क्या है? द क्रेनियम also called the brain box protect the brain, right? The bones of cranium have ear spaces called the sinuses. These sinuses reduce the weight of the skull and also give a resonating sound to the voice. जैसे कि बोन्स ऑफ क्रेनियम में कहते हैं फ्रंटल 1, पार्शियल 2,
occipital 1, temporal 2, sphenoid 1, ethmoid 1. फ्रंटल बोन क्या है? नंबर ऑफ बोन कितने हैं? 1 है। और पोजीशन क्या होता है? फॉर्म्स ऑफ फोरहेड। पार्शियल बोन ये 2 होते हैं, 2 होते हैं। लार्ज फ्लैट बोन्स एंड एक्सटेंड फ्रॉम द टैप ऑफ द स्कल टू द साइड्स। ऑक्सीपिटल बोन 1 है, एक ही है। ओके, ये कहाँ फॉर्म होती है? फ्रॉम द बैक एंड बेस ऑफ द स्कल। टेम्पोरल बोन 2 होती हैं, फॉर्म्स द साइड्स ऑफ द स्कल। स्फेनॉइड बोन्स 1 है, फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द क्रेनियम एंड एक्सटेंड फ्रॉम वन साइड टू द अदर. It is a shaped like a bat with wings stretched. Ethmoid bone 1. नंबर ऑफ बोन किसी एथमोइड बोन की 1 है. फॉर्म्स ऑर्बिट्स एंड द नेजल सेप्टम प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ स्फेनॉइड बोन. राइट. Facial bones form front part of the skull along with the nose, heart, palate and lower jaw. Bones of the middle ear. Vertebral column. The vertebral column consists of a number of vertebrae which are named according to their location in the body. The vertebrae are named cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccyx. Each vertebrae has a spinous processes and transverse processes to which muscles are attached that move the vertebral column. Rib cage क्या है? The rib cage consists of a thoracic vertebrae, ribs, costal cartilages, sternum. The ribs cage protect the heart and lungs. It is protective as well as flexible. It moves outward and inwards, bringing inspirations and expirations respectively. Ribs corresponding to each thoracic vertebrae. There are 12 pairs of ribs. All ribs connect directly to thoracic vertebrae at the back. In the front, 10 pairs of ribs are connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum via costal cartilages. Each rib has 2 articulation surfaces on its dorsal end, hence is called a bicephalic. डिसऑर्डर ऑफ मसल एंड स्केलेटल सिस्टम्स क्या है? मिस्थेनिया ग्रेविस, autoimmune disorder affecting neuromuscular junctions leading to fatigue, weakening and paralysis and skeletal muscles of skeletal muscles. Muscular dystrophy, progressive degeneration of skeletal muscles mostly due to the genetic disorder. ये genetic disorder है. टिटेनी क्या होगा? रैपिड स्पास्म्स यानी कि वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड. Arthritis is caused by inflammation of the joints. It is a degenerative disease which occurs with age. The joints become stiff and are painful on movement. Rheumatoid arthritis भी 2 टाइप्स के. न्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, गॉट्स, ऑस्टियोपोरोसिस. Many types of disorder of muscular and skeletal systems. Right.
I hope you understand. Thank you.